Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biologycolony. In this video, we are going to discuss GATE Zoology questions of 2013. Before beginning this video, do subscribe to my YouTube channel and follow me on Telegram. So the first question is, which one of the following provides the strongest support for the theory of descent with modification? Early embryonic forms of diverse organisms, example fishes, birds and mammals, appear similar. Ability of fishes and whales to swim, variation in flower color in a given species, or skin color variation among individuals in a human population? Well, the answer is A. Early embryonic forms of diverse organisms appear similar. So, descent with modification means that the traits are passed down from generation to generation and sometimes undergo changes or modifications over time. And these changes may be caused by natural selection or even a mutation of DNA. This term was popularized by Charles Darwin in his book Descent of Man. इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के उनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स पाए गए थे. फिर जब वो डाइवर्ज कर गए तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके यही सेम ट्रेट्स देखे गए. सो सिमिलैरिटी जब मिली तो इसलिए कहा गया कि ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, मतलब ये डिसेंडेंट्स तो हैं बट विद सम मॉडिफिकेशंस और ट्रेट्स आर somewhat modified. Next question is, which one of the following is an example of sympatric speciation, origin of new species among wasps that pollinate figs, emergence of a new species among finches that migrated to an island and thus isolated from their ancestors, evolution of birds and bats' wings, or speciation of squirrels separated by a wide river? So, what is sympatric speciation? Sympatric speciation means it does not require, first of all, geographic isolation नहीं होता, unlike the allopatric speciation, and it relies on the development of reproductive isolation mechanism. तो reproductive isolation का क्या मतलब होता है? It includes various factors like competition for resources and sexual selection. So what happens? The selection acts against individuals of an intermediate type either through decreased viability or decreased fecundity. Then this creates preferences. Okay, mating preferences होने लग जाते हैं. Then this leads to reproductive isolation of the individuals and thus the speciation occurs. So none of these examples are of sympatric speciation. तो गेट ने इसमें सबको मार्क्स दिए हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्पीसिएशन ऑफ स्क्विरल सेपरेटेड बाय वाइड रिवर, ये एक एलोपैट्रिक हो जाएगा स्पीसिएशन. देन इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स विंग्स, ये एकदम अनरिलेटेड सा हो गया है. ठीक है, तो और ये भी देखिए आइसोलेटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स और ये माइग्रेट कर गया आइलैंड में, ये भी एक एलोपैट्रिक का एग्जाम्पल हो गया. सो मार्क्स टू ऑल दिए गए. So the primary difference between glycogen and cellulose is in the types of constituent monosaccharides, number of monomers per molecule, configuration of the monomers और susceptibility to acid hydrolysis. Well, दोनों में ही ग्लूकोज इन्वॉल्व है. द डिफरेंस इज दैट जो कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, इसमें अल्फा पाए जाते हैं ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में बीटा. सो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोमर्स का डिफरेंस है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एज यू कैन सी इन दिस टेबल, सब यूनिट है इसकी बीटा ग्लूकोज, इसका अल्फा ग्लूकोज, एंड द बॉन्ड्स एंड ब्रांचेस जो देख सकते हैं आप, सेलुलोज में कोई ब्रांचेस नहीं होती बट ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है. एंड सो these are the structures. Next question is, control mechanisms operate at any of the several steps involved in gene expression. Which one of the following is the key mode of regulation during the cell cycle? Transcription, mRNA processing, activation of protein function resulting from protein-protein interaction, or mRNA export? So option C is correct, क्योंकि इसमें क्या है, CDK and cyclin जो है ये दो तरीके के प्रोटीन है जिनके इंटरेक्शन से रेगुलेशन हो रहा है सेल साइकिल का. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, testicular feminization syndrome is a genetic condition wherein an individual with a XY genotype will have an external female-like phenotype. This is caused by functional loss of androgen receptor, increased production of estrogen and its receptor, functional loss of Mullerian inhibiting hormone,
या functional loss of androgen receptor and Mullerian inhibiting hormone? So the answer is A. Functional loss of androgen receptor. So testicular feminization syndrome occurs when a male genetically XY because of various abnormalities of the X chromosome is resistant to the action of the androgen hormones, which in turn stops the forming of the male genitalia and gives a female phenotype. तो इसमें क्या होता है कि XY होते हुए भी जो मेल है it develops female like phenotypes and it is due to the resistant to the actions of the androgen hormones. So fully functional androgen receptor या androgen hormones का function जब सही नहीं है तो ये syndrome होता है. Next question is, which one of the following defects do you expect to see if you were able to specifically block apoptosis in the developing limb bud of a frog embryo? The digits will remain connected through a web-like extension. The bones will not form and the limb would look like a paddle. The limb will look normal but would be larger in size. The anterior-posterior polarity of the limb will be lost. Well, the answer is the digits will remain connected through a web-like extension. So apoptosis क्या करता है? मान लीजिए ये आर्म है एंड देन यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अपोप्टोटिक फैक्टर्स वर्क करते हैं जिसकी वजह से इधर हमें डिजिट्स का फॉर्मेशन मिलता है. सो जब अपोप्टोसिस ब्लॉक हो चुका है तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी एंड वी विल गेट वेब लाइक एक्सटेंशंस. So option A, the digits will remain connected through a web-like extension is correct. So option A is correct. The formation of antigen-antibody complex helps in disposing antigen through the following pathways except neutralizing the antigen by blocking its activity. Yes. By directly hydrolyzing the antigen. Directly hydrolyzation नहीं होता है antigen का. Next is by promoting the precipitation of antigen. Yes, ये precipitation भी कराता है और activating cell lysis pathway. Yes. So except directly hydrolyzing the antigen, ये बाकी तीन जो है pathways follow करता है. The term ecological succession refers to a process wherein newer species populate a region that was devoid of flora and fauna. A transition phase wherein one particular set of species is replaced by another set of species. Changes in the community due to disturbance in the habitat. Yeah, all of the above. Well, the answer is all of the above. So ecological succession क्या होता है? Newer species जो populate करती हैं एक region को, yes, और वो region devoid of flora and fauna था. ठीक है, तो क्या होती है, पाइनियर स्पीशीज आ जाती है मान लीजिए, तो वहाँ पे कोई भी फ्लोरा एंड फौना नहीं था. पहला जो है मान लीजिए लाइकेंस आए, ठीक है, देन उसके बाद धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने लगे, हर्ब्स आए, श्रब्स आए, ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट बन गया. तो ये क्या हो गया, एक लॉजिकल सक्सेशन हो गया. द ट्रांजिशन फेज वेयर इन पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ स्पीशीज. यस, ये हो सकता है बिल्कुल. देन चेंजेस इन द कम्युनिटी ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस इन द हैबिटेट. यस, ये भी हो सकता है, जैसे फायर अगर लग गई फॉरेस्ट में, देन उसके बाद जो मॉसेज या बाकी जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नई कम्युनिटी बसा लेते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next question is, which one of the following options provide example for the term habituation in behavioral ecology? A fish transferred to a fish tank startles initially for a hand clap but not later. Migratory birds from the temperate zone migrating towards the tropical part during the winters. Adult kingfisher birds are more successful in catching fishes than their younger siblings. Female lizard getting used to a new male lizard during the courtship period. वेल द आंसर इज ए, क्योंकि जो हैबिचुएशन बिहेवियर है ये रिपीटेड बिहेवियर जो शो करते हैं. मान लीजिए रोज़ जो है फिश टैंक या 2-3 दिन में फिश टैंक जो है क्लियर करने के लिए या सफाई करने के लिए फिश को क्या है कि हैंड क्लैप के थ्रू निकाला जाता है. देन जैसे जैसे ये एक्टिविटी रिपीट होती है तो फिश क्या हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है टू दिस बिहेवियर.
So it does not startles further. So option A is correct. Next question is, among the following cell structure function pairs, identify the correctly paired one. Microvilli engulfment of foreign bodies, cytoskeleton for cell migration, and peroxisomes have are involved in cellular respiration, while nucleus are involved in mRNA transcription. Well, इसमें करेक्टली पूछा गया है, करेक्ट कौन सा है? तो माइक्रोवेला एंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन बॉडीज नहीं करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का इन इंटेस्टाइन्स, वाइल न्यूक्लियोलस जो है वो mRNA का नहीं rRNA का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. देन साइटोस्केलेटन, और ये क्या है? पेरोक्सीजोम्स. पेरोक्सीजोम्स सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वाइल साइटोस्केलेटन जो है वो सेल माइग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये एकदम करेक्टली पेयर्ड है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which one of the following most accurately states the goal of systematics? Classification system should reflect phylogenetic relationship. All animals should be classified based on the relatedness at the early embryonic stage. ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर सिमिलैरिटी मिल भी गई पर बाद में तो काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे. ठीक है. देन ऑल एनिमल्स शुड बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंस डेटा. बिल्कुल नहीं, काफ़ी सिमिलैरिटीज देखी जाती है डीएनए में, तो फिर इसके बेसिस पे हम बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीशीज को भी जो है साथ में रख लेंगे, तो जो कि गलत होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स शुड बी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये भी गलत है. So classification scheme should reflect phylogenetic relationship. तो जो ancestral relationship है उसको भी consider करके then जो है classification जो है उसमें system जो systematics का वो होता है goal. So option A is correct. Next question is, among the following options choose the one that is probably a cause of rapid diversification of animal groups during the Cambrian explosion. Adaptation of organisms to live in the salty environment of ocean, the emergence of coelom, movement of animals to land, या फिर the accumulation of sufficient atmospheric oxygen to support the metabolism of actively moving animals. So option D is correct. क्योंकि पहले क्या था कि फिशेस जो हैं वो ज़्यादा पाई जा रही थी rather than the land animals. देन धीरे धीरे क्या हुआ, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ने लगा तो एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ, जो कि लैंड और वाटर दोनों में भी रह सकते हैं. ठीक है. सो दिस सपोर्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्टिवली मूविंग एनिमल्स. तो कैम्ब्रियन के टाइम ये हुआ, कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. A newly discovered recessively inherited disease susceptibility trait DS is observed only in cotton plants with white flowers. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. Although the flower color R and DS are independently inherited, in a breeding program one variety that is homozygous for the absence of DS, homozygous for the absence of DS. ठीक है, तो मतलब small ds होंगे इसमें, बट हेट्रोजाइगस फॉर कैपिटल आर. हेट्रोजाइगस है तो मतलब एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो गया. देन वी हैव, देन इट इज मेटेड विथ another having white flowers but heterozygous for capital D S. So white flowers capital R and heterozygous है तो capital D capital S and small d small s. So इनका अगर हम क्रॉस करें, आप मान लीजिए अगर हम इसका करते हैं सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर, तो क्योंकि हमें पता है डिजीज तभी आने वाली है जब व्हाइट फ्लावर होंगे साथ में, तो हम देख लेते हैं व्हाइट फ्लावर बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो हो गया कैपिटल आर वंस अगेन. देन वी हैव, सॉरी ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और बाकी दो क्या बनेंगे, एक और बनेगा कैपिटल आर और एक और बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर. सो आप देख सकते हैं वाइट ट्रेड जो है वो तभी आएगा जब स्मॉल आर होंगे साथ में, बट यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है. अब चाहे कैपिटल डी एस आए या स्मॉल डी एस साथ में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. हमें क्या चाहिए, वाइट फ्लावर साथ में चाहिए, तो ही जाके डिजीज ससेप्टेबल होगी वो.
सो ये परसेंटेज में हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा. So option D is correct. Next question is, in a new species of moth, the genes for body color black, that is capital B, is dominant over gray, that is small b. Wing size, that is normal wing capital W, is dominant over vestigial, that is small w. And eye color capital R is dominant over white color, that is small r, are linked. तो ये सारे जो genes हैं body color, wing size and eye color, these are linked. So in this species, only one crossover event has been observed between any two homologous chromosomes during meiosis. In a cross between capital B, small w and small b, capital W, 5% of the progeny were black with normal wings. 5% क्या है? Black with normal wings. And in a separate cross between capital R, capital W and small r, small w, ये तो क्या मिल रहा था पहले, कैपिटल बी स्मॉल w से विद स्मॉल बी कैपिटल W एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है 15% आर रेड आइड, या हम बना सकते हैं इसको ओके रेड आइड विद वेस्टिजियल विंग्स. So this will be small w. Then in a third cross between capital B, small r, that is white and black body color, white eyed and black body color crossed with small b capital R. Then we are getting 10% of progeny were black colored with red eyes. Which among the following is the correct order of this gene of these three genetic loci? So अगर correct order देखा जाए तो 10 plus 5 अगर हम करें तो 15 बनाएगा. So order could be something like W B R और R B W, या फिर क्या हो जाएगा eye color, body color and wing size. So option D भी हो सकता है, C भी हो सकता है. So इसमें क्या किया है, marks to all कर दिया गया है. ठीक है. In vertebrates, the variations in the structure and function of nephrons are directly linked to the osmoregulatory requirements of the organisms depending on the habitats they live in. From the options given below, identify the correct combination that truly represents the adaptation seen in desert mammals. Long loops of Henle, short loop of Henle, hyperosmotic urine, large volume of urine, or removal of nitrogen as uric acid. Okay, so long loops of Henle, yes, they are found, while short loop of Henle नहीं मिलते इनमें. हाइपरऑस्मोटिक यूरिन मीन्स कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वाटर का जो है वो कंजर्वेशन कर रहे होते हैं अपने में. देन लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉस कराएगा. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एस यूरिक एसिड इतना सही नहीं रहेगा जितना कि यूरिया होएगा. ठीक है. सो ऑप्शंस 1 and 3 आर करेक्ट. As you can see in this paragraph, the anatomical structures for urine concentration found in animals living in desert or arid environments, although not all occurring in one particular environment, are wide medullae, long loops of Henle, long proximal tubules, and long collecting tubules, small renal corpuscles, and extension of renal pelvis, well-developed elongated papillae, occurrence of giant vascular bundles, and much more, and with urine is concentrated. Okay. Also renin content is moderately high in these species. So renin angiotensin aldosterone system is very active, thus retaining the sodium with water. So option A is correct. In Drosophila, mutations in homeotic genes result in which one of the following developmental defects? A. The anterior portion of the embryo will not develop. Several segments in the anterior region of the embryo will be lost. Segmentation will be lost and the embryo will have only one segment.
segment specific identities will be lost. Well, option D is correct because homeotic genes जो होते हैं they are involved in the segment specific identity of the particular segment. For example, there are two types of homeotic complexes like bithorax complex and antennapedia complex, and they are involved in the expression of structures like antenna and sex combs, etc. So option D is correct. Next question is retroviruses like the influenza virus escape the detection of pre-existing antibodies in the host by generating surface antigen variants. They do so by editing the surface antigen post-translationally because RNA polymerase of these viruses display high mutation rate during RNA synthesis because the surface antigens are attacked by the proteases present in the host cell because DNA polymerase of the host mutates the viral genome in the infected cell. Well, the answer is because RNA polymerase of these viruses display high mutation rate during RNA synthesis. So option B is correct. Next question is the relative number of individuals in each age group is an important demographic factor for the study of future growth trends. And this is normally depicted in the form of an age structure pyramid. Based on your understanding on population dynamics, match the following distribution properties of age structure, that is group 1, with the individual forecast given group 2. So we have in group 1, first is uniform age distribution in the pyramid. If there will be uniform age distribution, then the population is likely to be a stable population. So second option goes with the first one. Next is distribution skewed towards the younger age groups. So what will happen? Well, it will lead to possible unemployment in the near future. Because of the younger age groups, they all are now capable of doing a job, but due to higher number, the jobs will be sparse. So option second or group 1 second goes with third of group 2. Next is distribution skewed towards older age groups. Well, this will lead to increased government expenditure on medical needs and social security related issues in the near future. So third goes with the fourth one. Next is reduction in the number of males in the middle age group. Well, emigration in the recent past and the possible increase in the older age groups in the near future. Yes, this could be a possibility. So option B is correct. Next question is, like any other trait, animal behavior also evolves by natural selection. Which one of the following examples is not true with regard to the evolution of behavior by natural selection? The behavioral trait is determined only by genes. The behavioral trait varies within the population of that species. Yes, it can vary. The reproductive success partly dependent upon the behavioral trait. Yes. The behavioral trait is influenced by the genotype. Yes. So, the statement which says the behavioral trait is determined only by genes, this is not true because there are various other factors that will come into play. So, option A is not true. Well, the last question is among the following molecular process biological effect pairs, identify the mismatched pair. Histone deacetylation, activation of gene expression, protein phosphorylation, signal transduction, DNA methylation, sex-specific control of gene expression, proteolytic cleavage, activation of signaling by peptide hormones. Well, option A is the right answer. So histone deacetylation is not involved in the activation of gene expression, rather it inhibits the gene expression. So it is the mismatched pair. Thank you so much for watching this video. Subscribe to my YouTube channel Biology Colony. Also do check out my Telegram channel. Bye.